वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब में आपका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एंड डायोड्स। सो लेट्स स्टार्ट। वन थिंग्स। So basic the semiconductor materials are of three types. Insulator means which is very high resistance. अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वो अपोज करेगा, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा इजीली। उसके एग्जांपल है माइका और रबड़। दूसरे टाइप का मटेरियल है अपना कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। इट इज़ हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस एंड ये अगर रेजिस्टेंस लो है तो ईजिली करंट को पास करेगा अपने अंदर से। लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टर्स। Semiconductor neither a good conductor nor a insulator. In some condition it will behave like it can pass the current, and in some condition it is behave as a insulator. So basically there are the two types of semiconductor, silicon and germanium. Most of the electron devices manufactured by semiconductor along with the conductor and insulator. किसी भी एक इलेक्ट्रॉन डिवाइस में सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। So this is the atomic structure of the silicon and germanium. This is nucleus and these are the cells, and the outermost cells both having 4 electrons, that is called valence electrons. तो अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए दूसरे जो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स या होल है अट्रैक्ट या करेंगे, जिसकी वजह से फ्लो इंक्रीज होगा। सो बेसिकली outermost cell में 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स सिलिकॉन बाउंडेड by 4, it can bound with 4 bonds. This is basically called covalent bonds. Please wait for some technical issue. So in order to break the covalent bond से टाइट होते हैं ना ये, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है that is the condition to must gain a minimum energy easy band gap energy and become free electrons. Means is that valence electrons and to reach to conduction band it have to travel some distance. If it valence electron have energy, then only they can reach to conduction, and to reach there they need some energy, and the traveled distance is that easy, known as the forbidden energy gap, the gap between valence band to the conduction band. This is known as forbidden energy gap. So this is the same pattern. Electrons how to travel the
electrons from valence band to the conduction band. Okay, known as the jumping electrons. So basically, net charge on the material is the neutral. If negatively charged, then its covalent bond. If there is a negative charge, then it break the covalent bond and move from its origin position. मीन्स इफ अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ओके, वो अपने एनर्जी गैप को ब्रेक कर, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे ये मिल जाएंगे और वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो उसके साथ मिलके एक फ्लो ऑफ करंट जो है बनाएगा. सो बेसिकली सेमीकंडक्टर इज वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. This is a single crystal semiconductor diode semiconductor material with no other type within the crystal. Okay, so intrinsic carrier concentrations अगर हमें निकालने हैं तो ये अपना है फार्मूला. ये यू हैव टू रिमेंबर दिस. नोटेशन क्या दी हुई है, एन आई बी टी बी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर minus Eg upon 2 kT, where B is the coefficient related to the specific material. Okay, and energy Eg is the energy band gap, K is the temperature, and T is the temperature, and small k is the Boltzmann constant, and that value is 86 into 10 to the power minus 6 electron volt per Kelvin. So this is the example. The next thing is main things. First is intrinsic semiconductor and second is extrinsic semiconductor. That is known as donor atoms. मतलब ये देने वाला होता है. मतलब impurity of 5 valence electrons is diffused in silicon and is called donor atoms. मतलब ये देने वाला होता है, ये रीच होता है. फॉस्फोरस एटम इसका एग्जांपल है, called the donor impurity, since donate the electrons. फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स आइटम ज़्यादा होते हैं तो उस दूसरे सिलिकन को देके एक बॉन्ड बना लेता है. और ये जो फॉस्फोरस है एक प्रकार की इम्प्योरिटी है जिसको हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं. और फॉस्फोरस को सिलिकन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं मिलाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग. और जो डोनर इम्प्योरिटीज होती है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर. और जो एक्सेप्टर होती है वो बनाती है पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, इसका दूसरा टाइप है एक्सेप्टर टाइप एटम्स. इसमें वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इम्प्योरिटीज को एंड इट विल मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर. The material containing impurities atoms are called extrinsic semiconductor या doped semiconductor. Okay, so here is the thermal equilibrium equation. To know the conditions, N naught into P naught, that is equal to Ni square. N naught is the thermal equilibrium concentration of electrons. P naught is the thermal equilibrium concentration of hole. Ni is the intrinsic carrier concentration. So move on next. At room temperature, T is equal to 300 Kelvin. Each donor atom denotes a free electron to the semiconductor. Okay, if donor atom concentration Nd is much larger than the intrinsic semiconductor concentration, then approximately N naught approximately Nd,
द होल कंसिडरेशन पी नॉट इज इक्वल टू, तो आप उस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एज यू डिस्कस लेटर। अगर यहाँ पे एक्सेप्टर की कंसिडरेशन आया तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द सेम। here is one question you can try later on. I will solve this. So thank you for this.